आइए जरा इस वीडियो में हम करंट गेन्स इन ट्रांजिस्टर स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इज एसी करंट गेन कॉमन बेस के अंदर, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, दैट इज रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट टू स्मॉल चेंज इन एमिटर करंट एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द कलेक्टर बेस वोल्टेज। देन वी हैव द सेकंड, दैट इज द कॉमन बेस एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज होता है। ये बीटा इज इट इज द करंट गेन इन you can say common emitter circuit, small change in IC upon small change in IB, and VCE is constant. So relation between the two according to Kirchhoff's law, IE is equal to IB plus IC. So these are the small variations in base current, collector current and emitter current. Dividing both sides by delta IC, we get this relation, that is 1 by alpha is equal to 1 by beta plus 1 by 1. So this comes out to be beta is equal to alpha upon 1 minus alpha. So remember that this alpha is the current gain in common base and beta is the current gain in common emitter. So alpha for the common base is very small, 0.95 to 0.99, because most of the charge carriers, they diffuse into the base, and the base current is very small, एंड ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर क्रॉस कर जाते हैं, बेस थिन होता है. सो दैट इज व्हाई द बेस करंट इज स्मॉल. इन केस ऑफ दिस कॉमन एमीटर, दिस इज वेरी हाई, गेन इज वेरी हाई, 20 to 100 in case of common emitter. So it is used as the amplifier common emitter mode. Now let us come to the characteristics of the common emitter, characteristics of NPN transistor. ये सर्किट डायग्राम में बहुत सिंपल है. अब आउट इनपुट के लिए देखिएगा हम क्या करेंगे, VBE, दिस इज VBE, इसको वोल्टेज को चेंज करेंगे और हम क्या करेंगे, करंट नोट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, बट साइमल्टेनियसली वी विल मेंटेन VCE कांस्टेंट. मैंने शुरू में VC को मान लिया 4 वोल्ट रखा, एक वोल्ट ग्राफ प्लॉट किया सिंपली बिटवीन दिस VBE एंड IB वे, तो वी गेट कर्व लाइक दिस वे. देन आई कीप द VCE that is at 10 volt, then again I get this curve. So this is at 0.4, the potential barrier is overcome, then current starts increasing abruptly. तो इसी तरह से यहाँ पर बात होती है 0.6 के आसपास जो पोटेंशियल बैरियर है, दैट इज ओवरकम एंड द करंट increases in this way. It is not a straight line but a non-linear device. So the input resistance is defined as the ratio of the small change in base emitter voltage to the small change in base current at constant values of the collector emitter voltage. Then we come to the this output characteristics. In this case we plot a graph between VCE, this is VCE, and you can say this is IC at constant values of the base current. बेस करंट को हम यहाँ फिक्स रखेंगे और इनमें वैल्यू ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट लाइन आती है, व्हेन IB is 0 we get a line like this way. This is the graph between collector emitter voltage and you can say the collector current. So this line, that is 0.5, the potential barrier is overcome, then the current starts increasing in a almost linear fashion. As I increase the value of the base current, ये देखिएगा जो हमारे पास कर्व है ऑलमोस्ट आके स्ट्रेट लाइन हो जाती है. ये रीजन है जो दैट इंडिकेट्स द रीजन ऑफ द वेरी हाई रेजिस्टेंस, एंड दिस रीजन इंडिकेट्स द रीजन ऑफ लो रेजिस्टेंस. दिस शेडेड रीजन इन द ग्रीन इज नोन एज द, that is the saturation region, and this region is known as the cutoff region. Transistor as a switch is operated between these two regions, and this region is known as the active region. So the output resistance is delta VC upon delta IC. जो भी आप यहाँ चेंज करेंगे वोल्टेज में, डिवाइडेड बाय द चेंज इन द करंट एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द बेस करंट, दैट विल गिव द आउटपुट रेजिस्टेंस. इन दिस केस जो रेजिस्टेंस हमारे पास बहुत हाई है. देन वी कम टू द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज सिंपल ग्राफ बिटवीन बेस करंट एंड कलेक्टर करंट. वी गेट ए स्ट्रेट लाइन. सो बीटा AC is equal to delta IC upon delta IB. VC is constant. Similarly, beta DC is equal to IC upon IB. Thank you very much for watching the video.